Recording in progress. Hello everyone, good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Hello, good morning. So today we are going to do present perfect tense, right? Okay. Yes. Just a minute, let me share my screen. So present perfect tense, we can call it present perfect tense. First, we need to know the sentence structure. That will be subject. Then after that, have or has according to the subject. Then verb third form or we can say past participle. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव और हैज चूज करना है, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब थर्ड फॉर्म. नाउ Ma'am, ma'am, यस, I think there is some noise. I think it is coming from your side. So if you can take earphones, I think that would. is there any background noise? I think so. Others please tell. बाकी के लोग बोलो कोई नॉइज है बैकग्राउंड में या फिर नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. What? I could hear it. It's like the wind noise. Something. तीन तो फैन तो चलेगा लाइक दैट. इफ यू से दैट प्लीज स्विच ऑफ योर फैन, दैट No, इज no, नॉट. no. Yes, you need the. But Siliguri, do you still need the fan? I mean, I'm wearing a sweater.
That's why I have coughing issue, no? Okay. So where to use have and where to use has, right? कहाँ पे have add करना है, कहाँ पे has add करना है. Now you need to remember one thing, that with third person singular number, for example, he, she, it, and any kind of singular name. With that we add has. ठीक है. कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होगा, he, she, it और कोई भी नेम, उसके बाद हम has add करेंगे. एंड बाकी के जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे आई, वी, कोई भी प्लूरल हो, या फिर यू हो, या फिर यू नो एनी काइंड ऑफ प्लूरल कैन बी. सो विद दैट यू नीड टू यूज हैव. नाउ यू कैन सी द एग्जांपल हियर. You have seen that movie many times. So you is subject. Then after that have can be seen. And then past participle form of see, that is seen. See, saw and seen. Interrogative, to make it interrogative, what we need to do? We need not to add anything from outside. Just interchange the position of have or has and the subject. Have को पहले लाना होगा. For example, have you seen that movie? अगर has है तो has को subject के पहले लाना होगा. That only we need to do. For negative, need to add not after have or has. You have not seen that movie. So to make it negative क्या करना होगा? have को और has को पहले लाना होगा. And negative के लिए interrogative के लिए पहले लाना होगा. And negative के लिए have और has के बाद not add करना होगा. So that is the sentence structure. Now where to use present perfect? कौन से scenarios ऐसे होंगे जहाँ पे हम present perfect tense use करेंगे? We use the present perfect to say that an action at an unspecified time before now. The exact timing is not important here. So although we are saying present perfect, हम present perfect बोल तो रहे हैं, but उनका जो time period है वो actually past है. ठीक है. बट यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में भी आप बोलो दैट मैंने एक मूवी देखी है, तो कब देखी है दैट मीन्स दैट इज पास्ट. बट कब देखा है, यू आर नॉट मेंशनिंग दैट. मैम मैंने पहले देखा है, यस्टरडे देखा है, लास्ट. पास्ट से चला आ रहा है, ऑनगोइंग है, और प्रेजेंट में पता नहीं ना कहाँ से. ऑनगोइंग नहीं, ऑनगोइंग एक्शन अगर होगा, मैंने एक मूवी देखी है, तो आप पास्ट से लेके अब तक मूवी देख रहे हो. नहीं, जैसे मैं 10 साल से जयपुर में रह रहा हूँ और आगे भी. वो अलग टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो है. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ये है कि अनसर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट में हुआ है. टाइम आपको उतना टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम पता नहीं. मैंने एक मूवी, जैसे मैंने बोला मैंने एक मूवी देखी, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, कब किया है मैंने वो नहीं बोला है, बट ये हो गया है. ठीक है. लेकिन जब भी आप बोल रहे हो कि मैंने कल रात को एक पिक्चर ड्रॉ किया था, तो ये हो गया सिंपल पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. लेकिन जब आप टाइमिंग नहीं ऐड कर रहे हो, मैंने किया है, हो सकता है कि 2 दिन पहले, हो सकता है कल, हो सकता है 10 दिन पहले, इट डजंट मैटर. तो वो है present perfect tense. Now here you can see that you need to remember one thing, that with present perfect tense you can't use any kind of specific timing. Specific timing means yesterday, 1 year ago, last week, when I was child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc. ये है सारे specific timing जो हम present perfect tense के साथ use नहीं कर सकते. What can be used with present perfect tense? We can use ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet. ये सारे जो time expressions है, ये आप use कर सकते हो इसके साथ, present perfect के साथ. Examples, you can see that I have seen that movie 20 times. I think I have met him once before. यहाँ पे आप बोलो I think, मुझे लगता है मैं उससे कहीं मिली थी once, पहले एक बार मिली थी. कब मिली थी वो नहीं, एक बार मिली थी. ठीक है. तो once जैसे हमने यहाँ पे. Excuse me, I'm sorry to disturb you. No issue. I think आप सभी के माइक्स म्यूट कर दीजिए, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है. हाँ, म्यूट कर दीजिए. Everyone else mute yourself. I think it is okay. Everyone else please mute yourself. I can't switch off the fan, sorry. Yes.
So people have not traveled, and in this way only I take class every day. So nothing else is happening in my background. So people have traveled to the moon, right? Here we are not adding any kind of time expression. People have traveled to the moon, or people haven't traveled to the moon. These all are the examples. Now that is use number one. Use number two, you can see that topic one, experience. We can through present perfect tense we can share our past experiences. Okay, for example, you have been somewhere. आप कहीं पे थे, आपने कभी ट्रैवल किया है, या फिर आपने एक मूवी देखी है, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो, पास्ट एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टू फ्रांस, मतलब मैं फ्रांस में रही हूँ. आई हैव बीन टू फ्रांस 3 times, मैं फ्रांस में गई हूँ 3 बार. I have never been to France. मैं कभी भी फ्रांस में नहीं गई. So this kind of expressions, past experiences can be shared by this tense. While we are using I have been to France, I subject. After that you are adding have, and be third form is been. Be third form is past participle is been. So that's why be मतलब क्या? Whenever you use be as main verb, यहाँ पे आप be main verb के हिसाब से यूज कर रहे हो, क्योंकि have जो है वो helping verb है, right? तो main verb जो be है वो उसका मतलब है होना. मैं वहां पे थी, फ्रांस में थी कुछ दिन के लिए, तो that is called कि be का थर्ड फॉर्म. that's why we are using have been. I have been to France. now अगर मैं आप बोलना चाहते हो कि मैं लंदन में गई थी, राइट, मैंने वहां पे विजिट किया, तो I have been to London, like that. बट आप ये नहीं बोल सकते कि 1993 में गई थी, 90 और 2003 में गए थे, ऐसे नहीं, टाइमिंग नहीं. ओके. Next, change over time. Whatever in maybe anyone's look or anyone's anything. If you see any kind of changes over the time period, अगर टाइम की वजह से किसी चीज में और कोई पर्सन में कोई चेंजेस आया, तो उसको डिफाइन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ग्रोन सिंस लास्ट टाइम आई सॉ यू. जब हम किसी से मिलते हैं बहुत दिन बाद, तो आप बोलते हो ना कि अरे आप तो बहुत, जब कोई बच्चे से मिल गए तो आप तो बहुत बड़े हो गए हो, मैंने तो आपको छोटा देखा था, लाइक दैट. सो ये क्या हुआ, टाइम की वजह से चेंजेस आए. The government has become more interested in arts education. तो धीरे धीरे क्या हुआ है, गवर्नमेंट आर्ट्स एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो गया है, टाइम की वजह से चेंजेस आए हैं. और माई इंग्लिश हैज रियली इम्प्रूव्ड सिंस आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तब से मेरा इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गया. तो लाइक दैट चेंजेस ओवर द टाइम यू कैन डिफाइन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. accomplishment. Accomplishment means achievement, whatever you have achieved or someone else has achieved. To define that, we can use this tense. For example, man has walked on the moon. That's kind of an achievement. Our son has learned how to read. Doctors have cured many deadly diseases, or scientists have split the atom. These all are achievements, right? And we are sharing by using present perfect tense. Next is an uncompleted action you are expecting. एक uncompleted action मतलब एक जो एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अब तक हो जाना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, जेम हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट. जेम ने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया. और सूजन हैजंट मास्टर्ड जापानीज बट शी कैन कम्युनिकेट. उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया है अब तक, जो कि हो जाना चाहिए था, बट शी कैन कम्युनिकेट, वो बात कर लेती है. बिल हैज नॉट स्टिल अराइव्ड. बिल अभी तक नहीं पहुंचा है. द रेन हैजंट स्टॉप्ड. रेन रेन अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है, जो हो जाना चाहिए था. टॉपिक नंबर 5, मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम. मतलब पास्ट में सेम तरीके का एक्शन साथ में नहीं, अलग अलग टाइम पे बहुत बार हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी हैज अटैक दैट सिटी 5 times. आर्मी ने उस सिटी को 5 बार अटैक किया है. और आई हैव हैड 4 quizzes and 5 tests so far. सो मैंने क्या किया है, 4 quizzes and 5 tests दिया है अब तक. so far मतलब अब तक इस सेमेस्टर में. We have had many major problems while working on this project. तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुए थे इस प्रोजेक्ट में काम करने के टाइम पे.
while working on this project means जब मैं काम कर रही थी इस पे। तो यहाँ पे क्या सेम तरीके का प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है, आर्मी ने अटैक किया है, बहुत बार किया है, बट एक ही टाइम पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे पास्ट में। सो यहाँ पे आप देख लो हैव हैड, right? So why we are using have had here? Because the sentence structure is like same. I है subject, then आपने have लगाया, then why had? Because had is the past participle form or verb third form of have. यहाँ पे आप have जो I have had आपने यूज किया, have यहाँ पे पहला वाला जो have है वो है helping verb, नेक्स्ट जो हैव है वो उसका हैड है, वो हैव का थर्ड फॉर्म है, दैट मींस आप मेन वर्ब भी हैव ले रहे हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आई हैव हैड, not continuous next day, continuously. Okay, so that's all about present perfect tense. If you have any kind of doubt, you can ask. Any doubt, anyone? After completing this present perfect continuous and total 4 tenses of present tense, I'll take a kind of exam. Okay. Ma'am, please explain have had. Sorry? Please explain have had. Yeah? Ma'am, please explain have had. Explain. Have had. Which one? Have had. Have had. Okay. Yes, ma'am. So have had means the sentence structure of present perfect we know, that is subject plus have or has plus verb third form, right? So here also same it is, subject is I, then according to I हमने choose किया have, and then the main verb is also have, and for that we are using the third form of the main verb जो कि had है, have had had, वही main verb। जैसे कि if I say I was having dinner, तो यहाँ पे जो have है ये मेन वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं ना, was है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह have यूज कर रहे हैं, तो वही सेम वे में यहाँ पे भी हमने मेन वर्ब की तरह have यूज किया एंड जिसका थर्ड फॉर्म हमने had लिया। Ma'am, where we use have had. पहले तो स्विच ऑन योर कैमरा मिस्टर इंट्रोवर्ट। यस टेल। Where we use have had, ma'am. सॉरी? Where we use have had. Had, because we were saying that I have had many major problems. Have का मतलब, please tell me the meaning of have when you use have as main verb. I have a pen. Have who. I have a pen, right? आपके yes, पास एक ma'am. पेन है, मतलब रहना, existence, no? Yes, ma'am. Or you can say belongingness kind of. So यहाँ पे आप बोल रहे हो I have had many major problems, मतलब मैंने फेस किया है बहुत सारे प्रॉब्लम, मेरे पास थे। I have a problem आप बोलते हो ना, Yes, ma'am. Okay. I have a problem, तो वही सेम वे में आप बोल रहे हो I have had a problem, because आप many major problems, because you are talking about past. Had means like तुम पास Have वाली मेरे बात पास कर रहे हो. problem है, मतलब एक प्रॉब्लम है मेरे पास, तो that's why in normal sentence also you say that I have a problem. Okay. तो वही आप बोल रहे हो I have had a problem, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम अभी नहीं है, था कुछ दिन पहले। Okay. Got it? Got it. Is it clear, Nana? Yes, ma'am. Clear. So, as I said that after completing present perfect continuous, I'll be taking kind of an exam, so it's better you practice at home, and that day only I will get to know that how much you have understood. And everyone kindly switch on your cameras. Nothing is going on that you need to switch off your camera. Okay, so the topic I have given. So the topic I gave in previous class. See, here I told that the topic I have given. Now, if I'm saying I have given, that is present perfect tense. Kindly switch on your cameras. Your camera need to be switched on for 1 hour. So here I can't say that I have given a topic yesterday, because I have given that is present perfect tense and yesterday is specific timing. So we have just learned that with present perfect tense you can't add any kind of specific timing. Okay, so you need to use simple past tense here. If you really need to add the specific timing here, that yesterday मैंने जो topic दिया था, so you need to say that
whatever topic I gave you yesterday. And if you need to use present perfect in that sentence, you can't add yesterday. I have given you topic. मैंने एक topic दिया है. Okay. So the topic was gender equality, right? Yes, ma'am. So I'm calling out your name one by one, and you need to describe. And I'm muting you all. You all are unmuted. Okay. So let's start with Rinku. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Gender equality. It is it is most important topic in this time. Gender equality. Gender equality. That means uh, people of all gender have equal rights. Mm, like not a woman, not a man. That gender equality means opportunities and responsibilities for all gender, like woman, man, transgender. Uh, Everyone is affected in this time, ma'am, for gender equalities. Uh, it is very important for our life and our social life, ma'am. To make democracy a success. For success of democracy, gender equalities is very important, and uh, for self confidence, gender equalities is most important. Ba- um, Basically, women's for women's gender equalities is very important for self confidence. uh, uh, for social and political development, gender equalities is important. um, uh, uh, if uh, 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 if we are able to gender equalities, nation is for the development of nation. डेवलप सो द डेवलपमेंट लाइक मीन्स मैं बोलना चाह रही हूँ कि जेंडर इक्वलिटीज होंगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट उसमें दिखेगा. If in our country gender equality is there, then our nation will be grown or it will move forward. Yes, ma'am. In this time, gender equalities is very important, but sometime I feel that socially it is very uh, unable to use gender equalities, ma'am, like um, religions. Everyone is mostly everyone is think that I want to son, because religions, some importance work like religions means लड़का ही होना चाहिए, तो ये काम लड़का ही कर सकता है. So it is think nahi hoga, things. Some people think, right? yes, ma'am. Don't add is with it. Okay, please continue. Ma'am, in India, we are living patriarch system. So it is
so that gender inequalities, son or daughter, ma'am. Mm, and ma'am, this causes um, gender equality is cause uh, is illiteracy, ma'am. In India, 82% men are literate, and 60 only 52, I think 52% is women literacy, ma'am. So it is so that gender inequalities, ma'am. It is, Rinku, you have one problem that every time you are adding is, am, or are with it. Don't use. Whenever you are using simple present, just add subject plus verb on. Nothing else. Oh, It yes, shows. It yes, is shows name. Okay? yes, ma'am. Uh, uh, Ma'am, this cause uh, poverty, poverty life, ma'am. And role of some I thinks that in our society, very most give uh, very most important role of son in religions rituals, ma'am. Mm. And ma'am, gender equalities, I believe that I want to promote the gender equalities, like that uh, um, mm, like that at home. Firstly, at home, gender equalities is gender equalities promotes, uh, and give proper value of women in for work, ma'am, like husband or wife, mm, then to equal values, give the equal values in our um, home, ma'am. At our Ma'am, yes, ma'am. at our home. At our home, ma'am. Yes, that's, ma'am. Okay, Rinku, so you have a little bit of pronunciation issue. For example, you are saying cause and daughter. So don't add too much stress on you. You're saying cause and daughter like that. So that Yes, has to be cause and daughter. yes, ma'am. जैसे you need to pronounce it in certain way that there is no you. अगर you ना हो तो आप कैसे pronounce करोगे? Cause and daughter. Okay? Yes, yes, ma'am. और जो एक चीज आप कर रहे हो एमिजार ऐड कर रहे हो हर जगह पे, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट। और थर्ड पर्सन के साथ साथ ओनली आपको उसके बाद जो वर्ब यूज करोगे उसके साथ एस और एस। जैसे आपने बोला आई थिंक्स, आई Mm. थिंक्स नहीं होता, आई फर्स्ट पर्सन है, तो उसके बाद Okay, आई थिंक होगा। ठीक है? okay, ma'am. Thank you, थैंक ma'am. यू रिंकू। ओके, नेक्स्ट इज अंकित। Gender equality in India means that women and men same chances, given same chances in life. Men should have same rights, same chances, and accept all areas same, given same, and this uh, include opportunity in education, job, healthcare, and freedom. But this time, if given same chances, both men and women, so grown up early development India, if the early development India has more development and um, कॉपी पेस्टिंग।
मैम थोड़ा मैंने पढ़ा था मैम मेरी 7 years of experience. मैम कॉपी मेरी पेस्टिंग पता चल जाता है 1 मिनट में. आपने एक सेंटेंस बोला मुझे पता चल गया. मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कॉल पे एचआर से 10 से नहीं 50 मिनट तक इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, लेकिन जेडी में आके मेरा कॉन्फिडेंस ईडी थोड़ा तो ये है ही नहीं, कोई तो अपना हक ले ही नहीं रहा है. सबने तो आपके ऊपर टाइम दे ही दिया. ये जीडी नहीं है. आप तो अकेले डिस्कस कर रहे हो. जीडी में नहीं क्या होता है, नोट्स सब अपने मौके ढूंढते हैं, राइट? ऐसे मैम कि आई विल स्पीक, आई विल स्पीक. मैम फेस टू फेस बोलने में दिक्कत होती है, जबकि कॉल पे मैं अच्छा आराम प्लीज से बंद ना. अभी बोलिए, अभी ऐस, बोलिए. वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया. प्रॉब्लम ये है आपको खुद से प्रिपेयर, क्योंकि जब भी वाई आई एम टेलिंग नॉट टू कॉपी पेस्ट, बिकॉज ये कोई स्पीच तो नहीं है, राइट? ये आप अपना इंग्लिश ठीक करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हो. तो अगर आप कहीं से सेंटेंस उठाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पता चल ही जाएगा, तो अप्रिसिएशन तो मिलेगा, मिलने से रहा. लेकिन आपने जो सेंटेंस यूज किया उसमें आपका दिमाग कहाँ है? वो आपका इंग्लिश तो है नहीं, आप पढ़ के बोल रहे हो. यस सो रीडिंग के लिए तो आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने ज्वाइन किया स्पीकिंग के लिए, राइट? यस मैम. तो इट्स बेटर दैट यू कैन राइट डाउन योर ओन सेंटेंसेस, जिससे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे कुछ और आई कैन रेक्टिफाई, सो दैट यू कैन लर्न. यस ठीक है? आई विल ट्राई. क्योंकि आप जब भी एक ही सेट अपना मुंह खोलोगे, एक सेंटेंस बोलोगे, मुझे पता चल जाएगा वो आपका है कि या फिर गूगल जी का है. गॉट इट? जितना भी एआई आ जाए. ओके, सो see you in next class. Okay, thank you. यस मैम. Next class में अपना sentence. Okay? ओके ओके मैम, आई विल ट्राई. Thank you. Lavanya. Hello, ma'am. Hello. Gender Honey, this is your inequality. first class. Yes. Okay, this is your first class. So please give introduction first. I am Lavanya Prova. I'm from Murshidabad. Murshidabad, Lavanya. Yes, ma'am. Which place? Murshidabad is a district of West Bengal. No, Murshidabad I know, but the place name is where you stay. जहाँ पे आप रहते हो जगह The का village. The name of the village is Krishnanagar. Krishnanagar. Okay. Krishnanagar is in Murshidabad district. Okay. Yes, there is another Krishnanagar in Nodia. Okay. Got it. Because my grandfather and my grandmother, they used to stay in Krishnanagar. So in my childhood, I used to go a lot. They used to stay in Jiagonj. Do you know? Murshidabad Jiagonj. Yes, I know. Yeah, so there. Okay, so tell me, Lavanya, that why have you joined this class? To improve my speaking. Currently, what are you doing? I am pursuing graduation in English literature. Okay, so that's why you want to improve your English, and which career option you want to choose? I want to become professor. Professor. Okay, very good. Very good, Lavanya. So I think you are not aware of this topic. Today we are discussing gender equality topic. So for it's better that today you can listen to us the way they are discussing and everything. And after that, in next class, whatever topic I'll be giving, please you can discuss that. Okay. Okay, ma'am. And let me give my introduction to you. My name is Meghna Roy, and I'm from West Bengal. Got it? Thank Yeah, you. ma'am. Thank you. Okay, so next is Mr. Gajanan. Hello, good morning. In my opinion, gender equality means giving equal opportunity to all genders,
like You are male, not female, audible. and Please, transgender. you are not audible that much. Speak louder or just use any earphone. Hello, Yeah, please speak. can I audible now? Yes, you are audible now. Tell. Uh, yes, good morning, friends. Uh, in my opinion, gender equality means giving equal opportunity to all genders, like male, female, and transgender. The pioneer of gender equality in India is Pandita Ramabai and Savitribai Phule. Savitribai Phule is first woman uh, who is given benefit of education, first time in India. Because of that, hello, can I audible now? Yes, you are. Tell. Uh-huh. Uh, because of Savitribai Phule ji, all women we are seeing lots of good women now in our society, uh, like Sunita Williams, Kiran Bedi, my mother also, who is taking benefits of this education. Uh, in my opinion, if you become a superpower in next 10 to 30, 10 to 20 years, uh, gender equality roles important play important role in this society. Gender Plays equality plays gives an plays an important role in the society. uh, Hmm. plays an important role in our society. Huh. Gender equality gives equal opportunity to all women, men, and transgender to express their thoughts, their ideas, their innovation. It will definitely help our society to grow day by day. So that's it. I am not talking more than this. It's Thank okay. you. But the thing is, I am Gajanan ji, trying, but actually, uh, lots of things are there in my mind, but I can't express now. yeah, I I can just understand. searching that words, but it will take more time. Yeah, Thank you. definitely, definitely. But you are pronouncing जो woman आप बोल रहे हो ना, वो गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो क्या? उसको प्रोनाउंस कीजिए. Women, वुमेन नहीं है, वो है वीमेन. women. Okay, okay, वीमेन. women. ठीक है. Okay, thanks. Thanks. Thank you so much. Okay. Next is who didn't speak previous class, and Shubhajit Chakraborty. Hello, good morning, all. Good morning, ma'am. This is my first class. I don't know what the topic. Shubhajit, please give introduction first. Hello, my name is Sudhi Chakrabarti. I'm from West Bengal, but right now I'm staying in Maharashtra because of my job. So I come here for speaking English and fluently. So in my where I job, this place there is so many people. They speak good English, but I have no words. So that's why I stopped in somewhere. So that's why. Subhajit, you are working in Reliance. No, I'm working in, do you know sports store Decathlon? Okay. Okay. So because of that, because at the time of speaking, you can't remember any word, right? Yeah, Correct. because I'm job in three, five states. So mostly South Indian, like Andhra, Tamil Nadu, Chennai. So lot of words in my mind, so, but in speaking. Got it. Okay. So as I said, Lavanya also that today we are discussing this topic, gender equality, but you can participate in next class. Okay. Okay. Thank you, Shubhajit. Okay. Who is next? Sumit.
Sumit, हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? yeah, are you? But please switch on your camera. वेट मैम। Okay, your camera is on. Okay, please speak. मैम सॉरी, मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, बट मैम मेरे को ज़्यादा मतलब इंग्लिश अभी आती नहीं है कि मैं आपको बोल पाऊँ। ठीक है, कुछ नहीं आपको बोलना है, प्लीज गिव इंट्रोडक्शन। हाँ मैम, मेरा नाम सुमित है, मैं रहने वाला हरिद्वार का हूँ। मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया। मैं पहले तो एक लेट हो गया, मैं अभी 6 दिन से पहले कहीं और थोड़ा बिजी था। ठीक है, नो इशू, नो इशू, नीड नॉट टू डिस्कस, जस्ट listen to us for today, okay? And please tell me that why, where are you from and what do you do? मैम मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले तो मेरे को प्रॉपर अभी इंग्लिश आती नहीं। मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया यही बता के ना कि मैं बेसिक अभी मैं सीखना चाहता हूँ। तो अभी क्या है कि मुझे ना अभी सामने वाले को चीज़ें समझानी भी नहीं आती। तो प्लीज़ मेरे को ना ये भी चीज़ आप बता देना कि मतलब कैसे हम लोग। ठीक है, बट यू सुमित, यू हैव जॉइंड इंटरमीडिएट क्लास। ओके। दिस इज इंटरमीडिएट, तो ठीक है, मैं बैलेंस कर लूंगी। बट अगर आपको लगे कि इंटरमीडिएट में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतना बेसिक से चीजें नहीं होगी, ठीक है? सो इफ यू आर कंफर्टेबल हियर, Ma'am, आई but डोंट हैव एनी इशू। uh, ma'am, I also requesting you to try to cover basic as well, because of lots of people have there no option in your courses. Because that This is is not basic just basic class. course up. Uh, This is not basic class. This is yes, intermediate I class. know, ma'am. Huh. So it is impossible me to, But I request to cover. try to just 10 or 5 to 10 minutes every day, For what? cover Basic all things. basics. Basic means I need Yes, to yes. go to lower To down to just noun, pronoun and everything. ओके। तो Okay, क्या that is the now thing. you just try to direct give direction. So if you think that, see, I can't understand that fact, that if you think that you are at basic level, so why have you joined this course? Means intermediate course. Did they tell you? नहीं तो मैम मुझे अभी क्या बेसिक क्लास ज्वाइन करना है? नहीं नहीं, वो लोग आपको मतलब आपने क्या खुद अपने हिसाब से ये क्लास चूज किया है कि उसमें उन्होंने बोला है? कोई उन्होंने ही मेरे को दिया था, मैंने तो बेसिक। उन्होंने। Ma'am, I think your technical supporting people are not. Not my technical support. I'm just a teacher. I'm working from home. No, That's no, it. no. Your yes, yes. I know your volunteers are not guiding properly. Okay, got it. Yes, So ma'am. definitely we can do that thing if you really need to focus, and if it is not your choice, then you don't have any option, right? अगर ये आपका चॉइस नहीं है कि आपने ये क्लास किया है, तो Yes, yes, डेफिनेटली ma'am. मैंने दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। But मैंने parallelly we are. मेरे I am also पास trying in पास मेल है। another sources as well. मैंने जो मेल की हुई है फास्ट इन्फो को, वो मैंने बेसिक की मेल की हुई थी। बट जो इंटरमीडिएट क्लास दी हुई है वो आपकी साइड से मतलब कस्टमर केयर की साइड से मिली हुई है मेरे को क्लास। ठीक है, ठीक है। सो अगर उन्होंने दिया है तो मुझे लेना ही होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत बेसिक का, देखिए ये आपकी सी मेरी तो है ही, लेकिन एज यू आर ऑल्सो इन इंटरमीडिएट, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी बोलो कि मैम मुझे ये स्पेसिफिकली ये सीखना है, क्योंकि मेरा बेसिक का कुछ और ही है, ठीक है? बेसिक का कुछ और है, तो आपको बोलना होगा कि मैम मुझे ये भी चाहिए, ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए। देन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? जी जी। ये आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। और बाय द वे जो हम प्रैक्टिस और डिस्कशन कर रहे हैं वो तो सेम रहेगा। वो आपको करना होगा कैसे कि इफ यू आर बेसिक स्टूडेंट अनेबल टू स्पीक डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो तो आपको पहले लिखना होगा। दो जो बेसिक स्टूडेंट्स है ना, वहां पे भी मैं ऐसे ही करवाती हूँ। वो लोग डायरेक्टली बोल नहीं पाते तो वो लोग पहले लिखते हैं, उनको जो लगता है, बिकॉज दे आर एबल टू रीड एंड राइट, they can't speak. So first they need to write it down and in class they need to elaborate it. ओके ओके। ठीक है? तो अगर जो लोग आपको लग रहा है कि गजानन जी आप तो बोलो ही मत, आपने बोला है आज, ठीक है, without writing and everything, so don't say that I'm basic students. Basic student. Yes, yes, ma'am. You are not basic student. Those who are No, no, basic no. student. Actually, no. This is my mindset, ma'am. Actually, I want to come out of this mindset. Sorry, please But repeat. definitely, your support will make me able
बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं, प्लीज रिपीट। आपका मतलब वॉल्यूम Ma'am, I'm just basically this is my mindset, ma'am. I just recall it. Definitely, you will support me to come out of this mindset. ओके सो आई हैव अनदर गुड आइडिया। अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। सो अगर आपको आप एक काम कर सकते हो, आप ये तो क्लास ले ही रहे हो, आप बेसिक में भी ले लो एडमिशन। वहाँ पे शायद फीस कम होगा, तो अगर बेसिक में भी ले लो तो हाँ हाँ, बेसिक थिंग्स भी वहाँ पे कवर हो जाएगा। यस यस, ट्राई करते मैम, ट्राई करते। हाँ, और अगर लगता है तो डेफिनेटली जो वे में मैंने आपको, क्योंकि बेसिक मतलब क्या, आपको बोलना नहीं आता, राइट? यू कांट। हाँ बस मैम आप ऐसा, हाँ हमारा जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप हो क्या? ग्रुप में मैं नहीं हूँ। अच्छा जी, तो एक काम कर सकते थे ना मैम आप, आई ना एम वो नॉट स्टेप बाय अलाउड देयर। स्टेप प्रोसीजर भी अगर बताएंगे ना, तो वैसे हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो भी हो जाएगा हमारा ऊपर। बाकी ठीक है, आप कोई बात देर नहीं, आर ये, आप क्लास में मुझे बोलना कि अभी देखिए 3 महीने का कोर्स है और रेगुलर क्लास है, बहुत बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है? ऐसा नहीं कोई यस जल्दबाजी नहीं है। मैम, सो यू कैन टेल मी दैट देर मैम आर, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो, आई विल मेक यू। Ma'am, you give me थैंक only direction. I am applied. ओके श्योर श्योर, जस्ट ओके। हु इज नेक्स्ट, हु वांट्स टू स्पीक? I have a question. या Ma'am, I Well, so after we get done with the tenses, what's next? Then what are you going to do after the ten? Are you only going to focus on interactions after the tenses? interaction, it is there, but you are not able to practice that much. If you are practicing with anyone for 4-5 hours per day, then you don't need any grammar vocabulary. Or by only practicing you can speak, right, fluently. But if you don't have that opportunity to practice with anyone for 4 or 5 hours every day, then you need to learn grammar, you need to learn vocabulary. There is no other option. If you think that for 10 minutes in class I will speak and then I will be fluent speaker, that is not going to happen. What do you think about my fluency? How fluent do you think I am out of 10? If you have to rate my fluency. There is no limitation. Even I'm not fluent right now. No. I'm asking for myself. Like, rate my fluency I out of can't 10. rate anyone. That totally depends upon your mindset, how you can see yourself. But I think, according to me, no one is expert. Even I'm not expert. I'm Yeah. teaching you, but today also I'm learning. Yeah, me Right? too. Every Me day too. everyone is learning, until the last breath I will learn only. Yeah. So I can't say I'm very much fluent in English. No one is fluent, right? There is no limitation of fluency. Even So fluent means what? It is not nothing like that कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, right? Fluency means you are very much comfortable with English. You are sleeping, and if anyone asks a question in English, you can easily answer. That is called fluency, being comfortable with the language. So no one is that much comfortable till now, actually. When that yes, day, ma'am. and that day, if you think that okay, I have become fluent speaker, that day is your last day of learning, and gradually you are just welcoming your demotion, nothing else. I will keep learning English till the last Yeah. breath of my And life. exactly, and don't just, we need to be confident but not overconfident that okay, I know everything, I will manage. Not this kind of attitude is wrong for us. So it is better that yeah, definitely I'm learning, I will keep on learning, and we need not to see that how much fluent and everything. People will tell you automatically, you will get compliment. If you're a fluent speaker, you will get compliment, you need not to ask. Got it? And few of the things what you asked, that after completing tests what we are going to do, whatever is necessary for speaking, we are going to do this only. Okay. Can you give a rough idea? Idea means in grammar, for example, if you all tell that I need to learn that voice change. Advanced grammar means see, in intermediate, in basic class we teach till tense. After that we don't teach anything. In intermediate we start with tense,
and after that maybe that is called voice change or narration change if you really want to learn it. Otherwise, in communication, if you don't use narration change, that doesn't matter, right? So Ma'am, that is uses not of mandatory. models. Ma'am, uses of models. Sorry, Models. modal verbs. Yeah, Models, yeah. models. Sorry, forgot to mention. Modal verb is very important, and after this, we are going to do that. Yes, ma'am. Modal verb is very much means it is important in advanced English as well as intermediate everywhere. So that we are going to Yes, ma'am. definitely learn. I forgot to mention, and then vocabulary. In vocabulary, we'll be learning a few of the advanced words. And did I give any kind of task to your class that okay? Yes, yes. One vocab words. So what about that? Have you learned? Have you remembered any word? Yes, absolutely. Now, which kind of task, ma'am? I don't know what it is. I told everyone to just take one word or prepare one word with the meaning and the examples, advanced word actually, so that we can learn one word from each of you. Okay. Okay, ma'am. एक वर्ड मैंने बोला था कि एक वर्ड आप लेना, उसका मीनिंग एनी काइंड ऑफ एडवांस वर्ड, इट शुड नॉट बी एनी नॉर्मल वर्ड, एडवांस वर्ड, उसका मीनिंग एंड एग्जांपल, ये होना चाहिए हर एक के पास एक एक वर्ड, so that we can learn. Okay, ma'am. And at the time of if others are telling, so you can write it down and make a note out of it. ठीक है? And whenever we learn a word, जब हम एक word सीखते हैं, after that we discuss that word and the meaning, example, we use it in our communication. We can remember it for longer time. कौन बोल रहा था? मैम मैं क्या बोल रहा था, देखिए अभी ना 90 क्लासेस में सारी चीज़ें तो कवर नहीं होंगी, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं एडिशनली कि वो हमें बेनिफिट देगा इंग्लिश कम्युनिकेशन में? यानी आप ऐसा क्या सजेस्ट करोगे कि हम अगर डेली, देखो 1 घंटे में तो कुछ नहीं होता, कम से कम हमें खुद से और 2-3 घंटा देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके हमारा वो अच्छा रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ दिस ऑल क्लासेस। देखो, जो लर्निंग के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे ग्रामर, वोकैबुलरी, ये जो 3 महीना आपके पास है इंटरमीडिएट, दैट इज मोर देन एनफ टाइम, ठीक है, लर्निंग के लिए। लेकिन प्रैक्टिस के लिए देयर इज नो लिमिटेशन. सो यू हैव व्हाट्सएप, यू हैव क्रिएटेड दैट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर व्हाट? Yes, ma'am. For what? We utilize the WhatsApp group. We can communicate with each You other. can share a link by yourself. Practice whenever you want. Don't disturb each other. Yes, yes. Right. If Only- females don't want to be participated, please don't disturb. Or females also Yes, ma'am. don't disturb males, right? If they don't want to talk to you, or personally, do not message. Do not do anything. Okay. Okay? Yes, That is my yes, request to ma'am. all of you. Yes. But Yes, ma'am. you just try to, yes, ma'am. But you try to join this class, join this. That is group, not ma'am. allowed. It will help us. That is not allowed. Okay. I can't be a part of that group, WhatsApp group. Okay, that's why I'm Yes, not ma'am. here. It is strictly not allowed. Okay, so for next class, you can take another topic that is mental health. Okay. Mental health. Mental health. That is the topic for discussion. So first we are Mental going to do in next class tomorrow. First we are going to do present perfect continuous. Madam, topic is mental health, na? So topic is mental. Ma'am. Yeah. What? Ma'am, Yeah. to this topic sorry? I have not spoken. On which topic? Gender equality. Gender equality. Okay, Yes, no issue. Next day you can speak. Who hasn't Okay, spoken? ma'am. Roshan Kumar. Roshan Kumar. Okay. Next day definitely. You Hello. can make me remember once. Tomorrow you will get the first काम topic. 8 में जा 7-8 टाइम जाके मैं 2 मिनट क्लास आया उस दिन कल। ठीक है रोशन, कल Okay, ma'am. आके पहले मुझे बोलना, पहला अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है? हाँ। Okay, ma'am. Thank you so much everyone. Bye, see you tomorrow. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. Okay. मैम
Yes. Ma'am, tomorrow I am not able to connect, Join. attend, Why? and ma'am festival. Chhat Puja. Chhat Puja. Ma'am, Yes, ma'am. Okay, okay, no issue. No ma'am, issue. tomorrow topic is mental health, na? Tomorrow's topic is mental health. Okay, thank you. Bye. Have a nice day, everyone. Thank you, ma'am. Next 2 days, ma'am. 2 days. Okay, Yes, ma'am. it's okay. But then only after you join, then only I will take exam. Otherwise, not. Okay, third day. Okay, okay, So ma'am. don't think that you will get rid of it. Okay. So bye. Have a nice day, everyone. All right. Here we go. This message will close. Man, grammar really. How much of that can we remember? But yeah, I need to pay more attention to the grammar. Like when she's, and I need to participate more in the classes. I need to talk more. Ho ho ho! And I really loving the lights. These are very, very, very like positivity. It makes me feel very positive. For whatever reason, the lights are making me feel positive.